Students, in this lecture we will study about synecology. What is synecology? Synecology is the study of how the organisms interact with their natural environment as a group. Now let me take you to one of the slides that we have studied earlier. So this is the slide in which we said that individual species, they come together and they form population. Then population of different species is combined together and it forms community. The synecology study is the study at population level and community level. You can refer to this lecture for further clarity. Let me take you back to the present slide. Therefore, in synecology we study about population ecology and we study about community ecology. Population is the group of individual species and community is the group of populations, different populations. For example, here I have made different circles. These circles represent, for example, different populations. P stands for populations. P1, P2, P3, P4. P1 is of elephant, P2 is for tiger, P3 is crocodile, P4 is giraffe, etc. And there is P5 for one kind of tree or plant, whatever. So there is interaction between these there are different kind of interactions between different populations. Now these interactions are studied in synecology. How different populations within a community are interacting with each other, and these interactions are called as biological interactions. And these biological interactions between population can be of two types. It can be either positive or negative. In positive interaction, say for example two species are interacting with each other. If both the species derive benefits out of this interaction, or at least one species derives benefit out of this interaction, then we can say that it is a positive biological interaction. Similarly, in negative biological interaction, if there is an interaction between two or more species and the interaction for both the species is negative, or for at least one of the species the interaction is negative, then we can say it is negative biological interaction. Suppose there is a population of tiger and there is a population of deer. When these two will interact, we know that tiger will eat the deer, so tiger will get positive impacted and deer will get negatively impacted. Similarly, if there is an interaction between deer and grass, we know that deer will eat the grass, therefore deer will get positively impacted and the grass will get negatively impacted in this interaction. पॉजिटिव इंटरेक्शंस के अंदर सबसे पहले हम स्टडी करेंगे म्यूचुअलिज्म. In mutualism we will study two types of interactions. First is symbiotic and the second one is proto-cooperation. And the second type of positive interaction is commensalism. In negative interactions we will first study about competition, then second we will study about predation, third one is amensalism, and the fourth one is parasitism. Now let us study each of these terms in further detail. So first one is in positive interaction is mutualism. So let us study mutualism. Mutualism is basically a positive interaction. It is positive because both the species are benefited because of the mutually
exchanging the material. For example, take honeybee and flower interaction. Honeybee is getting nectar out of the flower, and the flower is getting the benefit of pollination due to honeybee. Pollination is the dispersal of seeds of a plant to new areas. पॉलिनेशन के थ्रू जो फ्लावर्स हैं दे कैन इंक्रीज देयर पॉपुलेशन. इसी तरह नेक्टर मिलने से हनी का भी फ़ायदा होता है, हनी बी का. Therefore both the species are having mutual cooperation. The first type of symbiotic cooperation is mutualism. The first type of mutualism is symbiotic mutualism. Symbiosis को हम compulsory mutualism और obligate mutualism भी कहते हैं. Because species will have to live in close association. अगर उनको benefits लेना है तो they need to live in close association. इसमें जो famous example है that is of coral polyps and zooxanthellae. Zooxanthellae is a type of algae and coral polyps, it is an animal which belongs to the family Cnidarian. Cnidarians, that is coral polyps, will be constructing the structures or the houses in which zooxanthellae will be living, and zooxanthellae in return will provide all the necessary nutrients to the coral polyps. कोरल पॉलिप्स के अंदर बहुत सारी मरीन स्पीशीज़ आकर रहती हैं. दैट्स वाई दीज कोरल पॉलिप्स आर ऑल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट रीजन्स ऑफ द मरीन वर्ल्ड. अगर ज़ूज़ैंथेले जो एल्गी है वो कोरल पॉलिप्स में नहीं रहेंगे देन द कोरल पॉलिप्स विल डाई बिकॉज इट विल नॉट गेट द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स. हमने जो पहले हनी बी और फ्लावर का एग्जांपल लिया था, इसमें हनी बी अपना इंडिपेंडेंट रह सकती है, फ्लावर अपना इंडिपेंडेंट रह सकता है. जब भी वो क्लोज एसोसिएशन में आएंगे देन दे डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर. दे कैन लिव विदाउट ईच अदर. हनी बी एंड फ्लावर कैन लिव विदाउट ईच अदर, बट here in the case of coral polyps and zooxanthellae they have to live with each other. If one of them will leave the relationship, then the other one will die. Therefore this is compulsorily mutualism or obligate mutualism, which is they have to live in close association in order to survive. Second type of mutualism is proto-cooperation or facultative mutualism. इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं. 2020 के अंदर नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज़ ने ये फाइंड आउट किया था इन बेंगलुरु दैट देयर इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटो कोऑपरेशन बिटवीन कैटरपिलर एंड एंट्स. कैटरपिलर क्या होता है? कैटरपिलर इज़ बेसिकली द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई. सपोज ये एक प्लांट है, सो दिस इज़ अ प्लांट. सो जो बटरफ्लाई है, द बटरफ्लाई विल इंटेंशनली प्लेस कैटरपिलर समवेयर जहाँ पर ये आंट्स मूव कर रही हैं. सो दीज आर द आंट्स विच आर मूविंग अप एंड डाउन. और जो बटरफ्लाई है इट विल प्लेस इट्स कैटरपिलर समवेयर हेयर. इससे क्या फ़ायदा होगा? नाउ ये जो रेड एंट्स हैं जो ऊपर नीचे मूव कर रही हैं, लार्वा के ऊपर से जा रही हैं, जो कैटरपिलर के ऊपर से जा रही हैं, दे आर इन अ वे दे आर प्रोटेक्टिंग द कैटरपिलर फ्रॉम द प्रीडेटर्स. तो उसको कैटरपिलर को एक तरह से प्रोटेक्शन मिल रही है फ्रॉम प्रीडेटर्स. जो भी बर्ड्स एट्सेट्रा हैं जो कैटरपिलर को खाना चाहते हैं, दीज रेड एंट्स आर प्रोटेक्टिंग इट. और रिटर्न के अंदर जो कैटरपिलर है वो कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है. वो एंजाइम जो है वो रेड एंट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करती हैं. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट कमेंसलिज्म. आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा तो कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा. योर पॉजिटिव कमेंट्स गिव मोटिवेशन टू मी टू मेक मोर सच वीडियोज़. थैंक यू.